Hello, Matujime, and you're watching Hornbill TV's Prime Time. Now headlines. Situation deteriorated in the state as students' bodies gave a 24-hour ultimatum to the governor of 9th September to replace the DGP and hand over unified command to Chief Minister and deployed state forces in vulnerable areas, among others in Manipur. Despite the Supreme Court's direction to return back to work by 5 p.m. today, junior doctors continued their ceased work strike against the RGK Medical College rape and murder case. The cases of drone bombing incidents in Manipur would likely be handed over to National Investigative Agency, said the IGP Operations IK Muiva on Tuesday. At least 40 people were killed and 60 were wounded in an Israeli attack on a tent encampment in southern Gaza, civil emergency authorities and enclave have confirmed. At least 5 pilgrims were killed after landslide on the Kedarnath route in Uttarakhand last night. The 5 were reportedly killed after being buried under debris in a landslide near Sonprayag area following torrential rain. Horror of internet suspension came back to haunt Manipur as state government's new order on 10th of September said internet will be suspended once again. Situation deteriorated in the state as students' bodies gave a 24-hour ultimatum to the governor on 9th of September to replace the DGP and hand over unified command to Chief Minister and deployed state forces in vulnerable areas, among others. However, the ultimatum time expired around noon today, following which students erupted in massive protests at different places like Ima Ketil, Kakwa Lamlong and Kunung Mamang, among others. In Kakwa, protests turned violent as stones were pelted at the security forces. Protesters used catapults to throw marbles and iron pieces. Meanwhile, security forces formed rings around sensitive areas in Greater Imphal. The situation remains tense as heavy scuffles are being seen at the moment and Rapid Action Force personnel have been heavily deployed to control the enraged crowd. Tear gas shells, mock bombs and rubber bullets were being used by security forces to control the crowds. The situation could turn violent during night time as protesters are hiding at different narrow streets and engaging in continuous stone pelting. मेरा नाम यमुना वांगचुरमिते है और मैं अभी भी लिबरल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ भारत सरकार और मणिपुर सरकार पे। क्या है कि कल जो हम लोगों ने मेमोरेंडम जो गवर्नर पे दिया था ना, वो मांगे पूरी नहीं हुआ तो हमारा मांगे पूरी नहीं तो हम लोग हमारा जारी रखेगा सब। क्या है कि अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट इमा कथिल पे स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट मणिपुर के स्टूडेंट यहाँ पे रुके कल से रह रहा है। हमारा मांगे नहीं पूरी है, एजुकेशन पूरा जारी रखेगा। और एक और बात, हमारा रिप्रेजेंटेटिव 3 PM पे बात करने जाने का, भाई तब तक हम लोग कुछ नहीं एक्शन नहीं करेगा।
पर उन गवर्नर लोगों ने हमारा एक्शन को मतलब हमारा मांगे पूरी नहीं किए तो हमारा स्टूडेंट का वही जो अभी चल रहे हैं ना प्रोटेस्ट वो जारी रखेगा। तब तक हमारा स्टूडेंट कभी नहीं कुछ भी नहीं करेगा, एक्शन फर्दर एक्शन नहीं लेगा। पर कभी हमारा मांगे पूरी नहीं किया तो हमारा प्रोटेस्ट है ना जारी रखेगा। खाना पीना तो डोनेट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो इमाज है वो लोग कल से हमको फूड सप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। पर अभी तक तो हमारा स्टूडेंट जो है ना वो तो नहीं बता सकता क्या है कि हम लोग ये बता दिया तो पब्लिक पे हो गया तो ये सब फर्दर एक्शन करेगा। Manipur government has claimed indefinite curfew in Imphal West and Imphal East districts in view of the intense students' protests in the district. Orders issued by district magistrate in Imphal East informed due to the developing law and order situation in the district. Earlier order of curfew relaxation stands cancelled with immediate effect from 11 a.m. of September 10. Hence, there is total curfew in Imphal East district with immediate effect until further orders, it said. The order came in the wake of the students' community in Imphal Valley planning to intensify the protest for removal of DGP and security advisor to the state government for the alleged inability to deal with law and order situation in the state. The students also demanded the unified command be handed over to the state government led by Chief Minister Biren Singh and for ensuring the territorial and administrative integrity of the state. Separate orders issued by District Magistrate Imphal West informed curfew relaxation period for 10 September has been lifted with effect from 11 a.m. Essential services including media, electricity, court and health care, however, exempted from the purview of the curfew, it said. The cases of drone bombing incidents in Manipur would likely be handed over to national investigative agencies, said the IGP Operations I.K. Muiva on Tuesday. Addressing media, he said the cases may be handed to the NIA so that they can investigate at the highest level. They are collecting various pieces of evidences and have recovered all the bomb fragments which have been sent to the forensic lab so that chemicals which have been used can be detected. Mention may be made that drone attacks by one of the parties to the ethnic conflict was made for 2 consecutive days, followed by rocket attacks on September 6, which resulted in a death of 2 persons and injuring many in Imphal West and Bishnupur. The Assam Rifles has meanwhile deployed a few anti-drone systems in the state at fringe areas to repel any rogue drones. CRPF has also tested one anti-drone system and given it to the force deployed in the state. Yes, we are collecting the various evidences in the form of various drones that we have picked up, and also all the forensic kind of things that are left behind at the bombing sites by a forensic team. And we will be most likely handing over these very important cases to national investigating agencies so that it can be done, it can be fully investigated. This will be done at the highest level. And we take it as extremely serious development. So we are taking it with great and high priority. Right now we are studying it. It is being done by the forensic team. So we'll be later on we'll be disclosing whatever our findings at a certain later stage. Right now we would not like to comment on the preliminary kind of things, but we have received, we have recovered all those bomb fragments and all those things. So when it is sent to the forensic lab, all the chemicals that are used, all those things and many other things will be detected. Right now we are seriously considering handing over this kind of important things to the national investigating agencies. We'll take a short break. Keep watching. RCF दालमिया सीमेंट है RCF एक्सपर्ट यानी रूफ, कॉलम और फाउंडेशन एक्सपर्ट। दालमिया सीमेंट RCF स्ट्रॉन्ग तो घर स्ट्रॉन्ग। गरम ते पेट और मन के ठंडा रखे तो की मुखी खाली मीठा है लगे इदु हेल्दी আছে UHT ट्रीटेड और सफा भी আছে थर्ड इदु फ्रेश আছে और मुजाबी वाओ
केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी। केविंटर लस्सी मीठा भी हेल्दी भी। It doesn't take much to save a life. Practice safe behavior. Welcome back. Despite the Supreme Court's directive to return back to work by 5 p.m. today, junior doctors continued their cease work strike against the RGK Medical College rape and murder case. The doctors said the protest will continue until their demands are met and the rape and murder victim of RGK Hospital was given justice. The Supreme Court, while hearing the case on Monday, also directed that no adverse action should be taken against the doctors. Meanwhile, the RGK Medical College and Hospital has issued a notice to 51 doctors for promoting a culture of intimidation, endangering the democratic atmosphere and has been asked to appear before the inquiry committee on September 11 to prove their innocence. अभी हेल्थ क्या स्वास्थ्य भवन को घेराव हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है कि 5 बजे तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पे हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पहली बात हमें हमारी सारी डिमांड चाहिए। डिमांड मतलब अदर जितने भी मेडिकल कॉलेज की डिमांड, चाहे सीसीटीवी की हो, चाहे सिक्योरिटी को लेके हो, और ये सब डिमांड पूरी होनी चाहिए 5 बजे तक। और दूसरा हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, हमारे जो दीदी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके जो रेपिस्ट है, जो कातिल है, वो पकड़े जाने चाहिए। और अगर ये दोनों डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो स्वास्थ्य भवन का घेराव ऐसा ही रहेगा और आगे तक ऐसा ही चलता रहेगा। Meanwhile, the ex-principal of RGK Medical College, Sandeep Ghosh, and 3 others were sent to judicial custody till September 23 by the CBI court in financial irregularities case after completion of 8-day CBI custody. Ghosh was arrested by the CBI on September 2nd in a case of alleged financial irregularities at the hospital and has been in the agency's custody since then. Ghosh was arrested by the CBI after being questioned several times in a span of 2 weeks. 3 other people, vendors Biplav Sinha and Suman Hazara and Afsar Ali, a security guard, were also taken into custody. At least 40 people were killed and 60 were wounded in an Israeli attack on a tent encampment in southern Gaza, civil emergency authorities in the enclave have confirmed. The encampment was meant for displaced Palestinians. Gaza Civil Defense said that at least 20 tents in the Al-Mawasi area of Khan Yunis were hit in an attack carried out early Tuesday morning, September 10. Al-Mawasi has for long seen Palestinians sleeping in tents after the coastal area was designated a safe zone by the Israeli army during its ground invasions of Khan Yunis and Rafah. Al Jazeera Arabic reported, citing sources, that rescuers found craters of up to 9 meters, 30 feet deep at the tent camp while searching for survivors. Witnesses said they saw fires burning and Israeli reconnaissance planes circled overhead. According to a spokesperson for Gaza Civil Defense, it can be said after the initial assessment of the scene that this attack was one of the most heinous massacres in the frenzied war. At least 5 pilgrims were killed after a landslide on the Kedarnath route in Uttarakhand last night. The 5 were reportedly killed after being buried under debris in a landslide near Songprayag area following torrential rain. Rescue operations by the SCRF are underway. Confirming the incident, Additional District Magistrate Shyam Singh Rana said a landslide occurred on the national highway near Songprayag, due to which the passengers passing through there became victims of the accident. 5 people have died and 3 injured have been rescued. सोनप्रयाग के नज़दीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा
5 मृतकों और 3 घायलों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। श्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों से अपील की जाती है कि वह मौसम खराब होने पर 6 बजे के बाद अपनी सुरक्षा को देखते हुए आगे की यात्रा करें। The Uttar Pradesh Forest Department on Tuesday captured the 5th killer wolf, while one remains elusive. The wolves had been behind several attacks on villagers in Bairaj. Divisional Forest Officer Ajit Pradap Singh said the Uttar Pradesh Forest Department is taking the wolf to a rescue shelter. She said the captured wolf is a female and added that the Uttar Pradesh Forest Department operation has not concluded yet and a search operation is underway to capture the remaining killer wolf. This was the first operation in which drone was not used to capture the wolf, but it was being operated to find out the next location of the wolf in case it escaped. It used to run away upon spotting the drone. 9 people have been killed and more than 40 people have been injured until now due to the attacks by the man-eater wolves in various villages of Bairaj. नहीं, देखिए, जो ये 5वां भेड़िया हम लोगों ने पकड़ा है वो सिसैया एरिया में ही पकड़ा है हमने, और इसको जू भेजने की तैयारी है और पेस्टिसाइड वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन के बाद इसको जू भेज दिया जाएगा। पिछली बार तो गोरखपुर और लखनऊ भेजा गया, क्या नहीं है कि इसके अतिरिक्त और कहीं? नहीं, गोरखपुर जू भेजने के बारे में बात हो रही है, अभी देखते हैं, अनुमति मिल जाती है, जहाँ की अनुमति मिलती है वहाँ भेजा जाएगा। कितना बड़ी सफलता मिली, कितनी बड़ी ऑपरेशन था मैम, आप बहुत बड़ी आप लोग कामयाबी? ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत कामयाबी मिली। बहुत दिनों से हम लोग इन एनिमल्स को ट्रैक कर रहे थे और कल शाम को सूचना मिली थी कि इसने एक बकरी इसने उठाई थी और इसके पगमार्क्स भी मिले थे, तो इस पगमार्क्स को ट्रैक किया हम लोगों ने, ड्रोन से भी इसको देखा और उसके बाद फिर चूंकि रात हो गई थी इसलिए रात को ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मॉर्निंग में हमने ऑपरेशन किया, मॉर्निंग में इसको हमने रेस्क्यू किया। एक बच्चा हुआ है, उसकी क्या किया है? जी, एक बच्चा हुआ है, उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको भी रेस्क्यू करें। We'll take another short break. Keep watching. सुनो, आ गया आरबीआई का अल्टीमेट क्विज चैलेंज। 90 इयर्स का है सेलिब्रेशन और आरबीआई लाया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक सुपर ऑल इंडिया क्विज। मुकाबला है मजेदार, करो तैयारी जोरदार। होंगे लेवल्स 4 और हर लेवल पर मिलेंगे प्राइजेस जोरदार। कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं। सारी डिटेल्स आरबीआई के वेबसाइट पर। आरबीआई 90 क्विज, सीखो, खेलो, जीतो। To know more about HIV/AIDS, dial toll-free number 1097. Welcome back. Wrestler Vinesh Bokut, who joined Congress on Friday, will contest Haryana Assembly elections from the Julana seat. Ever since Vinesh Bokut met Congress leader Rahul Gandhi ahead of joining the party, it was speculated that the wrestler may be fielded from either from Jarki, Dadri or Julana. On Tuesday, Vinesh Bokut also took part in Havan at the inauguration of the party's election office in Jind under Julana Assembly constituency. Later, while speaking to the media, Bokut said that people made her win in wrestling and expressed her confidence that again, the people will make her win during the assembly elections. She further said that she is going ahead in contesting the elections with the blessing of God and elders. She also expressed her confidence that people will support for what is right, like they have always done. यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुश्ती में परमात्मा के बिना, बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना हम कुछ नहीं है। इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर, ये हमारे अपने लोग हैं, जो भी मेहनत करेगा उसको ये आशीर्वाद देंगे
और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये सही का साथ देंगे और सच्चाई के सामने खड़े रहेंगे जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। जो उम्मीद की किरण से वो मुझे देख रही हैं, मैं बस उनको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आपके लिए पहले रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं जानती हूँ कि एक माँ का पीड़ा, एक बहन का दर्द। और आज भी मैं लड़कियों से मिली थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में जा रहे थे, तो काफ़ी कुछ उनको चाहिए, स्टेडियम चाहिए उनको, कॉलेज के लिए बस चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि उनको मिले और मेरी बहनें मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी ऊँचा नाम करे। और मैं गर्व से कह सकूँ कि मैं इस क्षेत्र में मेरी शादी हुई थी, यहाँ की बहनें हैं, जो यहाँ की जो माताएं हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों में फ़र्क नहीं करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। देखिए सर, एक तो आपको दिखा रहा होगा रोड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो जो मूलभूत सुविधाएं जो जिंदगी जीने के लिए चाहिए वही नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि ये सबसे हमारे पहले एजेंडे में रहेगा। और बाकी समस्याएं तो बहुत है, अभी हमने स्टार्ट किया है, मेरा दूसरा तीसरा दिन ही है जैसे मैं यहाँ से आई हूँ, ये मेरा तीसरा दिन है, कल नामांकन है, उसके बाद में हम अपना पूरा मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए हमने क्या सोचा है। देखिए सर, कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आप नहीं चाह के भी कुछ काम करना पड़ता है आपको, मेरी मजबूरी है, मेरी पीड़ा है और मेरे अपने लोग समझते हैं इस चीज़ को। बस जो भी फैसला लिया है मैंने अपने बड़ों के आशीर्वाद से लिया है, ये मेरा कोई निजी फैसला नहीं था, बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, बड़ों ने मुझे बुलाया है, तभी मैं इनके बीच में आई हूँ। Auction at the Agriculture Produce Market Cooperative at Kundal in Gujarat's Rajkot district reportedly stopped on Tuesday to protest against the illegal supply of banned Chinese garlic in the market. Several bags of Chinese garlic were found at Kundal APMC 2 days ago. According to traders, Chinese garlic is distinct because of its size and smell and is cheaper than the local crop, making it profitable for smugglers and agents. Atulbai Kamani, director at Code Marketing Yacht, if government does not do any probe, then the garlic will slowly spread all over the country and farmers will suffer loss. This garlic is not even good for consumption. China is the world's largest producer of garlic. India banned Chinese garlic in 2014 amid concerns about fungus-infested produce entering the country. It also contains high levels of pesticides. Smuggling of Chinese garlic has surged due to rising prices into the Indian domestic market amid a significant increase in local prices. पूरे देश में जब चाइनीज लहसुन की आज जो व्यापारी है वो दूर रहने वाले हैं, उसके समर्थन में राजकोट मार्केटिंग यार्ड भी समर्थन देता है। प्रतिबंधित लहसुन जो चाइनीज का है वो गोंडल में परसों आया था और बिक्री करने के लिए डुप्लीकेट फार्मर बनाकर उसका बेचने चाहते थे, लेकिन वो पता चल गया, इसलिए वो लहसुन बिक्री नहीं हुई। अब जो गोंडल में आया हुआ है तो सभी जगहों पे आएगा, उसके सामने हम पूरे देश के जब लहसुन का व्यापारी है वो दूर रहने वाले हैं। इसके समर्थन में पूरा सौराष्ट्र और गुजरात का आज का मार्केटिंग यार्ड लहसुन का कामकाज बंद रखने वाले हैं। यह लहसुन है जो चीन से अफगानिस्तान वाया होके इंडिया में दाखिल हो रहा है, उसके सामने जो सरकार जब यह लहसुन आता है तब भी कोई कार्यवाही नहीं करती है और पूरे देश में यह लहसुन धीरे धीरे से फैलने वाला है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं या हमारे यहाँ के जो फार्मर है उसको आमदनी कम मिलेगी और ये लहसुन खाने के लायक भी नहीं है, अखाद्य है, वैसा सामने आया है। इसलिए इस पूरे देश की जो आज हड़ताल है एक दिन की, उसके साथ में हम राजकोट मार्केटिंग यार्ड समर्थन देते हैं। No violence accused and Kal Vigilante Bitu Bajrangi filed his nominations as independent candidate from Faridabad NIT Assembly on Tuesday. Bajrangi is an accused in a no violence case and currently out on bail. Bajrangi, the founder of Gau Raksha Bajrang Force, has a long association with controversies. 5 people, including 2 home guards, were killed and many injured in the violence that erupted on July 21st last year in Nu and spread to other areas of the state. In Gurugram, Naib Imam was killed at a mosque amid a series of incidents of arson. 5 cases were filed against him in July last year. After filing his nomination, Bajrangi on Tuesday criticized present leaders and pledged to address issues like love jihad and anticipated more legal challenges if elected. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.